सो साडी टीम अज पहुंची है जी वुडस्टॉक पब्लिक स्कूल बटाला विखे, जो कि ये स्कूल सिक्ख्या दे नाल नाल बच्चों नूं होर भी एक्टिविटीज़ दे विच काफ़ी जानकारी दिंदा रहिंदा है। अज असीं पहुंचे इन्हां ने एक साइंस नूं लैके प्रदर्शनी लगाई है, जिस विच इन्हां ने मैडिकल लाइन अते साइंस दी लाइन दे जो भी प्रोजैक्ट मॉडल तैयार कीते ने, इन्हां दे विच इन्हां दे टीचर्स दी काफ़ी हैल्प सी। देखण नूं मिलिया है कि बच्चों दे विच बहुत ही स्पिरिट और जो क्वेश्चनिंग दी ऑन द स्पॉट आंसर दी स्पिरिट सीगी बहुत वधिया सीगी। बच्चों नूं अपने अपने मॉडल बारे काफ़ी जानकारी सी, साइंस बारे काफ़ी जानकारी सी। इत्थे पहुंचे हुए मेहमानां ने भी बच्चों की सराहना की और स्कूल की सराहना की कि जिथे ये स्कूल जिहड़ा आ स्टडी दे विच मल्ला मार रहा है, उत्थे नाल नाल बच्चों नूं एक्टिविटीज़ दे विच साइंस मॉडल दे विच और होर भी खेडां दे खेतर दे विच होर भी कई जगह दे विच बच्चों नूं काफ़ी हुनर भर रहा बच्चों दे विच। देखण नूं मिलिया कि बच्चों ने काफ़ी ही मेहनत की है। स्टूडेंट्स की मेहनत नूं देखदे होए सारे ही दंग रह गए, क्योंकि बच्चों ने जिहड़े मॉडल तैयार किए ने वो बहुत ही अलग पैटर्न नूं लैके तैयार किए। इत्थे मौके ते चेयरपर्सन और प्रिंसीपल मैम ने इन्हां दी बहुत ही बच्चों की प्रेज़ की, सराहना की। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां दे टीचर्स दे सहयोग दे नाल बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और पढ़ाई दे विच जिथे अगे हैं होर भी एक्टिविटीज़ दे विच बच्चे काफ़ी अगे जा रहे हैं। सो स्कूल दी ऑल ओवर जे गल करिए तो स्कूल दे विच स्टडी नूं लैके और होर भी गेम्स नूं लैके जां होर भी एक्टिविटीज़ नूं लैके बच्चों दे विच एक उत्साह पाया गया। अज जिहड़ी इन्हां ने प्रदर्शनी लगाई सी, इस मौके एक फंक्शन भी किया गया। तुहानूं कुछ तस्वीरां दिखाउण जा रहे हैं इस एग्जीबिशन दियां। असीं भी अपने चैनल के माध्यम राहीं सब नूं यही कहांगे कि स्कूल दे विच जिथे बच्चों नूं नाल नाल स्टडी करवाई जाती है, उन्होंने प्रैक्टिकल बनाया जाए, उन्होंने इस तरह जो स्टडी है उन्होंने वो डीपली दसिया जाए, तां जो बच्चे का दिमाग जिहड़ा आ किताबी कीड़ा ना बन के वो एक प्रैक्टिकली अपना काम करे। देखते रहो चैनल द RN न्यूज़। इट इज़ वंडरफुल। मैं बटाले नूं बिलोंग करनी हाँ एंड आई नैवर इमैजिन कि इन्ना वधिया ते इन्ना अगां वधू स्कूल इस एरिया इस शहर च होएगा। सो आई एम रियली इंप्रैस्ड बाय इट। एंड बच्चों ने इन्नी सोहनी तरह सारे मॉडल फ्रॉम साइंस टू medical science and everything they've represented, and their flow of language, everything, and जिवें teachers ने उन्होंने prepare किया, we are really impressed by it. मैं all over India the perspective compare करना चाहांगा. What I see here is commendable. बच्चों दा knowledge of the subject, of their project, their presentation, their flow of language and their ability to answer your questions. बहुत घट इंस्टीट्यूशंस इस तरह की चीज़ मैं वेखी है। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इंस्टीट्यूट फॉर देयर एफर्ट एंड अचीवमेंट्स। मैं डॉक्टर सतिंदर निज्जर, चेयरपर्सन वुडस्टॉक बटाला। सो टुडे the Woodstock is holding a science exhibition, and it was my dream that children learn by doing, and this they have shown it. They have prepared wonderful models, and they have shown their talent, and the way they explained the models, that is commendable, and I am so proud of it, and they did it excellently. Me, Principal Woodstock. And this exhibition most probably is created or given an exposure to the children, how their classes are and how the teaching and learning process happens within the school, how the models or the most probably science, the subject of science, to promote the innovation and to create more scientific temperament among the children, that we create such models and they do it within as a teaching and learning tool within the class. And this is most probably the impact of our teaching and learning strategy that happens within the school, and this makes the learning more interesting and more innovative. Good morning, we are students from Woodstock Public School and we are here with our project.
The name of our project is Tesla coil. Main principle used in Tesla coil is to generate high voltage, low currents. It has used many major components such as a transistor and a resistor. This project allows us to transfer electricity wirelessly. Now my friend Sarthak will explain the working of this project and major components. The Tesla coil works by using electromagnetic induction and resonance to generate high voltage and high frequency electricity. It consists of two coils, a primary coil and a secondary coil. A primary coil creates a magnetic field and a secondary coil picks up that energy. When both the coils are tuned to the same resonant frequency, the voltage in the secondary coil is greatly amplified. There are two more components of it, a transistor and a resistor. A transistor is a miniature semiconductor that regulates or controls the electric current and a voltage flow, in addition to amplifying and acting as a gate or a switch for them. This is a resistor. A resistor is an electronic component that regulates or limits the electricity current in a circuit. It acts like a roadblock which make it harder to pass electricity through it. Thank you. Today, Vijaya and Sukhmeet are going to exhibit a model of a smart and self-sustainable city that we are expecting in the future. Why we are expecting this? Because we have experienced the lack of sustainability and smartness in our own city. We have concluded that today's generation is moreover addicted towards the digital technology, which is not sustainable in nature at all. So here we are showcasing a locality which is having all the facilities, for instance, medical care, education, grocery, clothing, sanitation, etc. For all these facilities, we have all these buildings, and you can clearly see that each and every building is having solar panels, and this is the most admirable part. As solar panels help to reduce carbon emissions, greenhouse gas emissions, it mitigates the climate change, plus stimulate the economic growth. So in this way, we will be self-sustainable, as we are not dependent on anyone for the electricity. We are having our own solar panels that can generate the electricity with the help of sun. Also, you can see a house here which is covered with grass. The main purpose of cover it with grass is to provide insulation to the house. And in this way, it will take up the heat of the sun and provide the cooling effect. So it will reduce the usage of air conditioners as well. So in this way, this house is sustainably built with solar panels as well as grass-covered walls. Basically, this is the sample of a residential area which is provided with all the facilities, as you can clearly see. तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਅਲਾਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਘੁਸੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਬ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਡੋਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਰੇਨ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ मॉडल है, तो बाकी सारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। इस मॉडल में क्या होता है, बेसिकली हमने एक बजर यूज़ किया हुआ है। वायर्स तो करते ही हैं, ब्लेड को हमने रेन वाटर सेंसर में कन्वर्ट कर दिया है, बॉक्स के अंदर बैटरी। इसमें क्या होता है, जब भी इस ब्लेड के ऊपर पानी गिरेगा तो ये एक पीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज ये एक्टिवेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों ने बेसिकली एग्जांपल लिए घर में इंस्टॉल करने के, लेकिन ये कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। एग्रीकल्चर में भी, खेती बाड़ी में भी हो सकता है, कमर्शियली भी हो सकता है। एग्रीकल्चर में खेतों में कैसे हो सकता है, फार्मर्स होते हैं, चावल उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। आपको सबको पता है चावल उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, तो क्यों टैप वाटर, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स यूज़ करना। जब हमने इसमें वाटर सेव कर लिया, हम ये वाटर पूरा से यूज़ कर सकते हैं, इससे क्रॉप भी बहुत अच्छी ग्रो होगी। ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮਰਿਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਆਪੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥਕਵੇਕ ਅਲਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੈ
ਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ weight ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ ਕਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਬੀਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Myself Rishita and my team partner Simranjeet are here from class 12 non-medical। आज हमने एक मॉडल बनाया डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो डिस्टिलेशन होता है जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है। उस सोल्यूशन को हम जब हीट करते हैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसके वेपराइज होंगे और जो हमारे दोनों कॉम्पोनेंट्स वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिखाई है, उस बीकर में हमारे पास अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्सड है। इस प्लास्टिक वाटर कंडेंसर में यहाँ पे आके अल्कोहल के वेपर्स आएंगे और यहाँ पे हमारे प्योर अल्कोहल आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल हीटिंग की है। कंट्रोल हीटिंग का मतलब हमने सिर्फ अल्कोहल के टेम्परेचर तक उसको बॉयल किया था। स्पिरिट लैंप है, इस फ्लास्क में अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, इस कंडेंसर में चिल्ड वाटर है और ये कलेक्टर है जिसमें प्योर इथेनॉल कलेक्ट होगी। सबसे पहले वो स्पिरिट लैंप इस मिक्सचर को हीट करेगा। जब इसका टेम्परेचर 78.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इथेनॉल जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल के वेपर्स इस पाइप से होते हुए इस कंडेंसर में जाएंगे, यहाँ पे आके वो वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो इस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। Good morning to everyone. Today I have a prototype of EMP device in my hand. This is a device which is used to destroy any electrical appliance within its range. It was brought to life by Soviet Union during the Cold War, and it is considered a war crime to use it in a war because it can bring a whole country into Stone Age if used appropriately. Whenever the spark is produced, the electromagnetic pulse is produced, which produces interference in the frequency of electronic device, and in some cases it produces malfunctioning, and mostly it produces permanent damage. So good morning, we are from Woodstock Public School Batala. We are from grade 8A and my name is Kesar. My name is Lavanya. This is Priyal and this is Kashish. We all have made this model that is based on how crime investigations are done and how a forensic team works. So we get a call from the forest cleaner that he found a body of a girl seemingly of age 20. Then we reached forest at 8:30 p.m. and firstly we secured the area with this caution tape, as you can see. Next we collected some pictures of the area, so photographic evidence. After that we collected all the physical evidence that we could, like this knife, the phone, the blood sample and all that. From her phone we tracked down her history. And she was at home till 5 o'clock. She left home for the spa she left home at 5 o'clock and reached spa at 5:15, and she was there at 6 and she was there at 5:45 and she left the spa at 6 o'clock and her location stopped down till 6. Know that someone would have manually switched off her location. After that we went to that spa, we went to that home, we found this bottle of oil that actually turned out to be minoxidil, and we have listed minoxidil's properties right here. And then we matched all the fingerprints and we matched all the evidence, and we came down to three suspects, this one being our main suspect. So we will send all our evidence and all our data to the court, and then they will decide the punishment and who the criminal was. Ishandeep Singh. And my name is Ashdeep Singh. We are from Woodstock Public School, Batala. Today we are going to present our project. First of all, I will show you one activity. Take this piece of cardboard and touch it with iron nails. Anything happen? No. Now, take this piece of aluminium and touch it with the iron nails. Anything happened? Yes. This happened because this is a metal detector. Metal detector is a device that helps us to detect metals such as iron, copper, aluminium, etc. Principle of metal detector. Metal detector uses electromagnetic induction to detect metal by generating magnetic field and analyze the return signal. Electromagnetic induction is the process of generating electric current by changing the magnetic field. Application of metal detector are spoken through my friend Isham.
Application of metal detector. Metal detector are commonly used by our security purpose in various settings, including airports, schools, transportation courts, etc. It can be used to separate metal scrap from garbage. Thank you. Me is Ritika and this is Harsidat and Vaibhav. I am going to represent my model, which is wastewater management. In this project, we will see that how the wastewater did they get purified. There are certain steps. Actually, there are 5 steps, which is coil, rocks, cotton, tissue. We will put the dirty water in it, then the purified water will be stand there. In this model, we have used 3 materials: rocks, charcoals, tissue papers and cotton. Now, when Vaibhav will be pass dirty water through these natural filters, you will observe that the clean water can be obtained from the other end. Now, Ritika is going to explain step 2. Step 2 is that we will pass the water from the bigger rock so that the bigger impurities can stay there. Step 3. Charcoals. Then treated water from the first step is allowed to pass through charcoals, where it removes micropollutants such as chloride, also used to control the odor of water. Step 3. Then treated water from the passes tissue paper, which is used to separate. Then the purified water is allowed to deliver different houses and colonies. According to us, in the upcoming year, where the wastewater is increasing, this method will be quite useful, natural and easy to manage the wastewater. Thank you. ਸਤਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਬਣਾਇਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਔਨ ਕੀਤੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਇਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ if we choose the way of science. So this project is totally based on how can we make our atmosphere clean and wise. So by this process we can reduce the level of a carbon dioxide in our atmosphere. Like if you see here, there is a one sliding. When we on this slide will move. The carbon dioxide coming out from the factories will slide down towards the water through the help of a sliding. Now its slide will help the water to making it a carbonated water, and this conduct all the pollution coming out from the factories will reduce also. By this process we can reduce the level of carbon dioxide in our atmosphere also and make it is useful also, like making a carbonated water which is used in CO2 like bottles like Coca-Cola, Limca, etc. So this is our project. This whole project is based on non-pollution. Thank you. My name is Rishit Agarwal. I study in Woodstock Public School, Batala. So here is the model of a moon rover and moon lander also. So its basic functioning is to perform research on the surface of moon about its surface and what could be found on its surface. So this is how we can demonstrate it. As you can see, there are lots of sensors like lidar and many more, and navigating system and command control system. So first of all, its gates will be opened, and then as you can see, there's a moon rover on it. So as you can see, this is a moon rover. I have made it using a base of a car and some other circuits, implementing IR on it also and some other lights. So this contains many different sensors like lidar, navigating system, temperature system, and some collecting and some other system which could collect the samples from the surface of moon. So this is an example of moon rover. My name is Vihan Mahajan and he is my friend Harshit Nair. Together we have made a project on how can we convert the kinetic energy of speed breaker into electricity. When the car passes over the speed breaker, the kinetic energy is transformed into mechanical energy and then electrical energy.
When the car passes over the speed breaker, the rack moves down, which helps in the rotation of the gears, which help in the rotation of gear of dynamo, which produces the electrical energy. This energy could be used in colonies to power street lights, traffic lights, and could even be used to charge EV vehicles. Together, we have to work together to create a cleaner and greener world. Thank you. Hello, and my name is Divansh. We are going to represent our project on kaleidoscope. This is a simple yet fantastic device which creates a beautiful symmetrical patterns. The basic kaleidoscope has mirrors set inside the tube with colored glass or bead at one end. And in this kaleidoscope, we have used the piece of broken bangles and plain mirror to create a certain patterns. Kaleidoscope is based on the reflection of light. When the light enters from the one side, it reflects from the each mirror and form beautiful mirrors. The founder of kaleidoscope is Sir David Bester. Thank you, everyone. And I am Gursirat from Woodstock Public School. So, today we have made this vacuum cleaner. So, Gursirat, can you tell me what is the use of vacuum cleaner? Yes, a vacuum cleaner is used to remove dust and dirt from floors, carpets, etc. Now we will tell you how we have made. It's work like this. So we have made this a vacuum cleaner with the use of waste material in-house. We use cardboard, motor, battery and etc. to make this vacuum cleaner. That is the specialty of it. The waste inside the vacuum cleaner do not damage the fan and the motor. Healthy good morning. Me Arvi and my friend Mushika. My school name is Woodstock Public School, Batala, are representing science project. This is about weather wonder. This is autumn. Autumn is my favorite season. It is also known as fall season. Autumn is a pleasant season. This is spring. Spring is my favorite season. It is the season of green leaves, beautiful flowers, etc. This is summer. Summer is very warm and sunny season. Everyone likes to eat ice cream in summers, and it starts from May and end with August. This is winter. Winter is very cold season. Everyone likes to make snowman in winter, etc. Thank you. Have a nice day. Morning to everyone. Today me Gurbas and me Kaina of 3rd A class are going to represent our group. This project is on amazing plants and topic is transportation in food and water in plants. Here the red pipe is representing xylem and blue pipe is representing phloem. Their functions are the tube that carry water from the roots to the leaves is called xylem. The tubes that carry food from the leaves to the other part of the plant are called phloem. Hello everyone, good morning. And this is our module. This is based on solar eclipse and lunar eclipse. I think so you do not know about eclipse. I tell you that eclipse are phenomena which occur when one celestial body changes to another celestial body and acts by the shadow. This is the light to the sun, to the earth, and this is light, and the final model that can exist is that the rotating earth in the photoms. I hope you love our project. Thank you so much.